friends, welcome back in our YouTube channel. Our today's topic is we are doing first example. In the example, we have given in the matrix A is equal to 2 row wise 2, 5, 19, minus 7 and 35 minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1, minus 5 and 17. Now we have to find the order of this matrix. So what is the order? The order of the matrix is what? So friends, how many rows are over there? This M is stands for the rows and yes, and stand for the columns. Right friends? So how many, and our order is what? M cross N. So what is our order? How many rows are over there? 1, 2 and 3. Right? So 3 cross how many columns are there? 1, 2, 3 and 4. So what is the order? Order of this matrix is 3 cross 4. Now next, the number of the elements. So what are the number of the elements? Let's see. If the order of 3 cross 4, if the order is M cross N, then the number of the elements will be Mn. Right? Number of the elements are Mn. So what are the number of the elements? The number of elements in given matrix are 4 3s are 12. Okay, so numbers are 12 and you can count 3, 6, 9 and 12. And the next question is write the elements A13. A13 that means first column and first row and third column. So first row and third column, that means this one. So this is A13 is what? 19. Second one what? A21. So second column and first row, that means 35. And third one A33, that means what? Third column, third row, third column, that means what? Minus 5. And the next one is A24. What is A24? Second row and fourth column, that means 12. And the third one is A23. A23 that means second row and third column, that means 5 by 2. This entry. Right? So this here, till here we have done our first. We have done one first question. Our second question is if the order of a matrix is 24 or if the elements of matrices are 24, then the possible order. Then find the possible order. So friends, you know that कि ऑर्डर्स में हमारे पास कैसे नंबर्स रहते हैं. सो ऑर्डर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स रहते हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट कि 24 किसके किसके टेबल्स में आता है. तो 24 फर्स्ट के टेबल में, दैट मीन्स 124 जा 24. सेकेंड के टेबल में सेकेंड 12 जा 2 12 जा 24. 3 के टेबल्स में आता है. सो 3 8 जा 24. देन आफ्टर 4 के टेबल में आता है. सो 4 के टेबल में नहीं आता है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट किसके टेबल में आता है? 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24. So we have how many orders? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have how many possible orders? So there are 6 possible orders. Matrix whose elements are 24. Okay. Now पूछा गया है कि what happened if 13 elements हो तो क्या होगा? If 13 elements, then
13, 13 के जो फैक्टर्स हैं आप वो देख लीजिए. 1 13 जा 13, तो एक ऑर्डर तो ये हो गया, एंड 13 1 जा 13, दूसरा ऑर्डर ये हो गया. तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, कितने मैट्रिक्स बनेंगी, 2 मैट्रिक्स बनेंगी. और कितने ऑर्डर्स की बनेंगी, 1 into 13, 1 cross 13 and 13 cross 1. Now we have the third example. Third example, if a matrix has 18 elements, 18 elements हो मैट्रिक्स के पास, then find the possible orders. So first देख लेते हैं कि 18 किसके किसके फैक्टर्स हैं, 18 किसके किसके टेबल्स में आता है. So first 18 1 के टेबल में आता है, 1 18 जा 18. 2 के टेबल में आता है, 2 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 जा 18, 9 2 जा 18, and last one is 18 1 जा 18. So we have how many orders, 1 2 3 4 5 and 6. So we have again 6 orders. 18 एलिमेंट्स की कितने ऑर्डर की बने, कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, 6 मैट्रिसेस बनेंगी. और कितने ऑर्डर की बनेंगी, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 and 18 क्रॉस 1. What happens if we have, if a matrix have 5 elements, so 5 elements हो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होंगे, so 5 क्रॉस 1 and 1 क्रॉस 5. so कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 2 मैट्रिक्स बनेंगी 5 ऑर्डर की, एक 5 क्रॉस 1 की और एक 1 क्रॉस 5 की. ओके फ्रेंड्स, our fourth question is construct a 2 cross 2 matrix A is equal to Aij whose elements are given by this, first, second and third. We have एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. आपको 2 क्रॉस 2 बाई 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है. दैट मीन्स फर्स्ट हम देख लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसी होती है फ्रेंड्स, A11, A12, A21 एंड A22. दैट मीन्स इसके लिए और इसके लिए आपको 4 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं, राइट. और फिर आपको मैट्रिक्स बना देनी है. सो सॉल्यूशन 1 हमारे लिए होगा. सॉल्यूशन 1, फर्स्ट विल कंसिडर दिस वन. सो कंसिडर Aij इज इक्वल टू 1 प्लस j, सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स I plus j the whole square divided by 2. So consider A11, right? So A11 that means I की जगह पर फ्रेंड्स कितना है, जनरली हमारी एंट्री कैसी होती है, Aij. तो I की प्लेस पर यहाँ पर कितना है 1, J की प्लेस पर यहाँ पर कितना है 1. सो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर देंगे. सो 1 plus 1 divided by 2 and 1 plus 1 the whole square. What it should be? It will be 2 and 2 square will be 2 square divided by 2 and 2 square will be 4. 4 by 2 will be 2 2s are 4, right? So our first entry will be 2. Okay, next one A12. So here what is I is 1 and what is J is 2. So it will be 1 plus 2 the whole square divided by 2. So it will be 1 plus 2, that means 3 the whole square divided by 2, and it will be what, 3 3s are 9, 9 by 2. Next one, what is A21, right? A21. So our I is 2 and J is 1. So it will be 2 plus 1 the whole square divided by 2. So again it will be 3 square divided by 2 and it will be 3 3s are 9, 9 by 2. And last one is A22. So it will be 2 plus 2 the whole square divided by 2 and it will be 2 plus 2 4 square, right? 4 the whole square divided by 2. 4 4s are 16, 16 by 2 and it will be 8. So our answer will be, what will be the answer? Answer will be A11 is 2, A12 is 9 by 2, A21 is 9 by 2 and A22 is 8. Understand friends? Well, go to the second example. Second question. What is our second question? Of course the solution. Aij equal to I by j. So what is our A11? A11 will be 1 by 1. So 1. A12, sorry, A12. A12 will be 1 by 2. So it will be 1 by 2. A21 will be 2 by 1. So it will be 2. A22 will be
2 by 2, so it will be 1. So now place the value. What is the answer? Answer will be, what is the first one? A11. What is A11? So 1. What is A12? 1 by 2. What is A21? 2. And what is A22? Again 1. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर थर्ड वन. सो थर्ड इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट aij is equal to I plus 2j the whole square divided by 2. So consider a11. So a11, for a11 we should have what? 1 plus 2 into 1. Okay, 2 into 1 is 2. The whole square divided by 2. It will be 2 plus 1 will be 3, and 3 square will be 9 by 2. What is a21? What is a, not 21, it will be 1, 2. So it will be 1 plus 2 into 2. Right? I की जगह पर हमने क्या रखा है? 1, और j की जगह पर क्या रखा है? 2. Divide by 2. Of course, whole square. So it will be 2 2s are 4. 4 plus 1 5. 5 square will be 25 by 2. Next, a21 will be I की जगह पर हमें क्या रखना है? 2, और j की जगह पर हमें क्या रखना है? 1. So 2 plus 2 into 1, the whole square divide by 2. Okay, so it will be 2. 2 into 1 will be 2. So 2 plus 2 4. 4 square, that means 16 by 2. 2 8s are 16. So answer will be 8. Next, a22. So it will be 2 plus 2 into 2 the whole square divide by 2. So it will be 2 2s are 4. 4 plus 2 6, and 6 square 36 by 2. This will be what? 2 18s are 36. So what will be the answer? What will our 2 cross 2 matrices? Answer will be, what is our a11? A11 will be, this is a11, a12, a21, a22. आपको समझाने के लिए ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिख दिया है, और आपका आंसर होगा 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18. Understand, friends?